Hello, dear shining stars. A very warm welcome to your Hindi class once again with your Hindi teacher, Prachi. And children, let's start with our Hindi textbook, Saral Hindi Paathmala class 7. So today we are going to do chapter number 7, that is computer. So we all are very well aware of computers. In each and every house there is a computer. Everybody knows to work on computer, and it has become very easy also with the computers to work on. So let's read about the computers. आज का युग कंप्यूटर का युग है. Today's era is the computer era. घर घर में कंप्यूटर देखे जा सकते हैं. बच्चों की रुचि कंप्यूटर गेम्स में अधिक होती है. And in each and every house there is a computer, and children are very fond of computer games. पहले जो कार्य मनुष्य अपने मस्तिष्क से घंटों में करता था, उन्हें कंप्यूटर के द्वारा मिनटों में किया जा सकता है. And previously, the work which was being done by the human brain, and it took much time to complete that work. Nowadays, with the help of computers, it can be completed within few minutes. आज के युग में यह एक महत्वपूर्ण साधन है, and in today's world, this is a very important tool. इसका स्क्रीन टीवी के पर्दे की तरह होता है और कीबोर्ड टाइप मशीन की भांति होती है. Its screen, the computer screen, is just like a television screen, and its keyboard is like a typing machine. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे मशीनी मस्तिष्क कहा जाता है. Computer is that type of machine which can also be called as the machine brain. It is a machine brain. इसका आविष्कार चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया, and Charles Babbage invented this computer. 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहला कंप्यूटर बनाया गया था, and in the starting of 19th century the first computer was made. तब इसका आकार बहुत बड़ा था, परंतु आज तो कंप्यूटर को हाथ में उठाकर कहीं भी ले जा सकते. At that time the size of the computer was very big, but nowadays the computer can be carried anywhere. You can carry the computer anywhere. कंप्यूटर का प्रयोग जटिल से जटिल बुद्धि को सेकंड्स में सुलझाने में किया जाता है. And the use of computer, how the computer is used, it is used to solve very difficult problem within seconds. इसके अतिरिक्त मौसम की जानकारी, देश विदेश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र की सजीव जानकारी प्राप्त करने में, विविध क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के बारे में जानने, मशीनी उपकरण बनाने, वैज्ञानिक अनुसंधान की बारीकियों को समझने, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष, खेलकूद, व्यवसाय, बाजार, केयर, मॉडलिंग, वीडियो गेम्स, पुस्तकों में उपलब्ध विषय वस्तु, यातायात व्यवस्था, भ्रमण, भूगर्भ विज्ञान, देश विदेश के वैज्ञानिक शोध, विविध नौकरियों का विशद विवरण, वास्तुशास्त्र एवं समुद्र के भीतर छिपी विचित्र संपदा, सभी समाचार पत्र, स्कूलों के परिणाम, कृषि क्षेत्र आदि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने में कंप्यूटर अपना भारी योगदान देता है. Now, this computer is used in various fields. Near about in all the fields, the computer is used, be it the weather forecast or the news of the foreign countries, the economic status, the social status, and the political status, anything. In medicine, it is used, the computer is used in medicine also, in games also, in the sports also, and in business, many things, video games, modeling, hair care, the books available, and the transport system. Anywhere this computer can be used, and everywhere it is used also.
नाउ कहने का तात्पर्य यह है कि आज के युग में जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का दखल ना हो. It means that nowadays no area is left, none of the area is untouched by this computer. Everywhere the computer is used. कंप्यूटर की शिक्षा अब लगभग प्रत्येक स्कूल में बच्चों को प्रारंभ से ही दी जाने लगी. This computer education is being given to each and every child in every school when a child is very young. इस कंप्यूटर के द्वारा जहां अधिकांश कार्य प्रायः शीघ्रता के साथ हो जाते हैं, वहां इसके कई दोष भी. Now, this use of computer, the computer is very useful for everyone, but the excessive use of computer, it has some drawbacks also. The excessive use of computer has given some drawbacks also. So, सबसे पहले तो इसके प्रयोग से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. The children's health is being affected by the excessive use of this computer. आंखें कमजोर हो जाती हैं और शरीर की सक्रियता, शक्ति, मौलिक सोच इससे प्रभावित हो जाती है. What happens when the children are working on the computers for a very long time? It affects their eyes. They are not in a habit of going out and playing. So the physical fitness also hampers them. खेलने कूदने से जो शक्ति बच्चों में प्राप्त होती थी, कंप्यूटर से चिपके रहने के कारण क्षीण हो चुकी है. The activeness which was there when the children used to play, go and play outside, that has reduced in the children by the use of this computer. The whole day they sit in front of the computer. सेहत खराब हो जाने से कई प्रकार की नई बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं. And just because the health is hampered, the health goes down, new types of diseases are coming up. इसलिए अनुभवी लोगों का कहना है कि कंप्यूटर का प्रयोग लगातार काफी समय तक एक साथ बैठकर नहीं करना चाहिए. So people say that the computer should not be used for a very long time at a stretch. At a stretch, we should not sit in front of the computer for a very long time. The computer should not be used. बीच बीच में शरीर को आराम देने के लिए, विशेषकर आंखों को आराम देने के लिए कंप्यूटर छोड़कर उठ जाना चाहिए और पलकों को बीच बीच में झपकाते रहना चाहिए. So to give rest to the body and especially to the eyes, what we should do? We should just leave the computer for some time, get up and go outside, have a walk, and the most important thing is you should blink your eyes in between. Okay? The eyes should be blinked in between so that your eyes get rest. The continuous looking into the computer gives a very bad effect on your eyes. So children, this was the use of the computer, how the computer is very useful to us, and how we should avoid sitting for a very long time in front of the computer so that our health does not go down. So what did you learn from this lesson, children? कंप्यूटर का अधिक समय तक लगातार प्रयोग न करें. The computer should not be used continuously for a very long time. Okay? Now, some exercise here. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Answer the following questions. घर घर में क्या देखे जा सकते हैं? What can be seen in each and every house nowadays? Computer. कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? Who invented the computer? Charles Babbage. Who invented the computer? Charles Babbage. कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? What else do we call the computer? मशीनी मस्तिष्क. मशीनी मस्तिष्क. मशीन ब्रेन. कंप्यूटर के प्रयोग से आंखें कैसी हो जाती हैं?
excessive use of computer, what happens to the eyes? By the excessive use of computer, it becomes weak. आंखें कमजोर हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं. ओके, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं. टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. आज किसका युग है? कंप्यूटर का, कीबोर्ड का, दोनों का. Today's era is of computer. Take this one, computer. किस शताब्दी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया गया था? 18वीं, 19वीं, 20वीं. The starting of which century the computer was made? The first computer was made in the starting of 19th century. Fine. कंप्यूटर के प्रयोग से बच्चों के स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ता है? How does the computer affect on the children's health? अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा. It gives puts a good effect or a bad effect, or it gives a very good effect. It's a bad effect. रिक्त स्थान भरिए. Fill in the blanks. बच्चों की रुचि डैश में अधिक होती है. Children are more interested in computer games. So, computer games. ओके. कीबोर्ड डैश मशीन की भांति होता है. कीबोर्ड इज लाइक अ टाइप मशीन. कीबोर्ड इज लाइक अ टाइपिंग मशीन. कंप्यूटर का आकार डैश था. प्रीवियसली द कंप्यूटर्स वर वेरी बिग, बड़ा. कंप्यूटर का आकार बड़ा था. आंखें डैश हो जाती हैं. The eyes become weak, कमजोर हो जाती है. सेहत खराब हो जाने से नई नई डैश शरीर में घर कर जाती है. When the health goes down, then what happens? New diseases catch hold of. So नई नई बीमारियां. Okay? Let's move further. सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का निशान लगाएं. टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट्स. पहले मनुष्य अपने मस्तिष्क से घंटों में कार्य करता था. Previously, the man used to work on some problem, used to solve some problem in hours by using his brain. Yes, this is true. Fine. So, put a tick here. Tick has to be put here. कंप्यूटर की स्क्रीन टीवी के पर्दे की तरह होती है. Yes, the computer screen is just like a TV screen. कंप्यूटर को मशीनी मस्तिष्क नहीं कहा जा सकता है. Computer is not called the machine brain. This is false. This is false. कंप्यूटर को हाथ में उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं. We can carry the computer anywhere. Yes, this is correct. कंप्यूटर की शिक्षा किसी भी स्कूल में नहीं दी जाती. The computer education is not given in any of the school. Is it right? No, this is wrong. So put a cross. Fine, children. Now, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Answer the following questions. कंप्यूटर के आकार का वर्णन कीजिए. Computer. How was the computer previously and how is it now? So, computer was very big in size previously. But nowadays, computers can be carried anywhere. So, computer के आकार का वर्णन. So, we'll write here the previous size computer. Computer पहले बहुत बड़े आकार के होते थे. पर अब nowadays what has happened? इन्हें we can carry it anywhere. हाथ में कहीं भी ले जा सकते हैं. Okay, children.
बच्चे कंप्यूटर पर क्या क्या देखते हैं? Children, what do children see on the computer? Mostly they see the computer games. क्या देखते हैं? Computer games. And what else do they see? They see cartoons. Okay? कंप्यूटर पर क्या क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है? You have just read in the chapter, by computers you can, in any field, you can take the information of any field. So just write down what are those fields in the chapter which you have read just now. Because there are many fields in which the computer is used. Almost in all the fields the computer is used. कंप्यूटर का लगातार प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? Why should you not use the computer for a very long time? Because it weakens your eyes. कंप्यूटर का प्रयोग लगातार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह आंखों को कमजोर बनाता है. आंखों को कमजोर बनाता है. Okay? Now, here are a few words for dictation, children. Just read it down and learn them. Computer, मस्तिष्क. Computer, मस्तिष्क. मस्तिष्क means brain. महत्वपूर्ण means important. वैज्ञानिक, scientific. व्यवसाय, business. So now let's do some language part here. शुद्ध शब्द पर गोला बनाइए. Circle the correct word. Here few words are written. The spellings are given here, and whichever spelling is correct, we have to put a circle on that. Computer, computer, computer. Which is the correct spelling of computer? This is the correct spelling of computer. Manushya. Manushya. This is the correct one. Mastishk. Mastishk. Krishi. Krishi. The correct word is krishi. This one. विलोम शब्दों का मिलान कीजिए. Now match the opposite words. आज. आज means today and tomorrow means kal. So match आज to kal. पहले, earlier. बाद में, afterwards. बड़ा means big and small means छोटा. बड़ा, छोटा. दोष, गुण. नई, new, पुरानी, old. नई, पुरानी. Fine. So these were some of the opposites. निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद. Translate the following sentences into Hindi. Today is the age of computer. So we have to translate in Hindi here. Today is the age of computer. आज का युग कंप्यूटर युग है. Fine. Computer was invented by Charles Babbage. कंप्यूटर का आविष्कार who invented? Charles Babbage ने किया. Charles Babbage ने किया. Okay? Then its size was very big. उस वक्त उसका आकार बहुत बड़ा था. First of all, its use has a bad effect on the health of children. सबसे पहले
इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है. Now children, the next one is दो मित्रों की बातचीत पढ़िए और पूरी समझिए. Read and complete the conversation between two friends. Anil and Sunil, they are having a conversation. Anil says, computer का आविष्कार किसने किया था? Who invented the computer? Now Sunil says, computer का आविष्कार who did? Charles Babbage ने किया था. You just now have read in the chapter, Charles Babbage ने किया था. Fine. Now next. अनिल, किस शताब्दी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया गया था? Anil says, in the beginning of which century was the first computer made? Sunil, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहला कंप्यूटर बनाया गया था. Sunil says, the first computer was made in the beginning of the 19th century. Anil, क्या तुम्हारे विद्यालय में भी कंप्यूटर की कक्षा होती है? Anil asks, are there computer classes in your school also? Sunil says, हाँ, तुम्हें पता है इस पर गेम्स तथा चित्रकारी भी होती है. Sunil says, yes, do you know it also has games and painting? Anil, अच्छा, इस पर जटिल से जटिल सवाल का भी हल होता है. Anil says, really, it has a solution of the toughest questions also. Sunil, बताओ कंप्यूटर कहाँ-कहाँ प्रयोग किया जाता है? Sunil, tell me, where are computers used? So now what does Anil reply? That where all the computer is used, in which fields the computers are used. So Anil says chikitsa means medicine, antariksh vigyan the space science, khelkood means sports, vyavsay business, bazaar the market, मौसम की जानकारी the weather forecast and many other fields. सुनिए, पता है कंप्यूटर का लगातार प्रयोग करने से हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं और अनेकों रोग भी हो जाते हैं. Sunil says, do you know our eyes get weak and many diseases befall upon us as we use computer continuously. So this was a conversation between the two friends. Now think and tell. क्या कंप्यूटर वास्तव में आपके लिए लाभदायक है? कैसे? Now think over it, children. Is the computer really useful for you? And if it is useful, then how? I hope you all must have understood that how the computer is useful to us, because it gives the information of nearly all the fields of life. But it should be used in a limited time, within a limited time, not continuously. A project work. कंप्यूटर के अंगों की सूची बनाइए. Make a list of parts of computer. You all must be very well aware of the different parts of the computer. So just list down those parts. Okay? Like the screen, the keyboard, the keys, fine, the hard disk, the CPU. These are the parts of the computer. List it down. Let's do and see. कंप्यूटर पर शैक्षिक कार्यक्रम देखिए और अपने मित्रों को बताइए. Now, on computers, when you're watching computers, there are many educational programs which can be seen. So watch the educational programs on computer and tell your friends. See any educational program and then next day go to school, discuss that whatever you have seen, the educational program, whatever you have seen in the computer, discuss that with your friends. Okay? So children, here we end up with our chapter number 7. And I hope you all have understood it very nicely. So go through the chapter again, read the chapter again, and we'll meet soon with a new chapter. Till then, stay tuned for the new video and have a very good day. Bye.